Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So continuing with our major topic of capital markets. So today we'll be discussing in detail about the regulator of the capital market, which is Sebi, that is Securities and Exchange Board of India. So it was constituted as a non-statutory body in 1988 through a resolution of the Government of India. So this is an important factual detail. Such statements they are asked in prelims examination, and then it was established as a statutory body in 1992. So this needs to be remembered, both these sentences. So जो preamble है सेबी का, what does it says, what does it talks about? So describes कि जो basic functions हैं सेबी के, that would be to protect interest of the investors in securities. Second would be to promote the development and to regulate the securities market, and for matters connected therewith or incidental जो बाकी सारी चीजें से related है. तो primary यही है, protect the interest of the investors and also regulating the market. साथ के साथ डेवलपमेंटल मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है. तो इंडियन कैपिटल मार्केट का व्हाट इज द साइज? सो वी नीड टू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दिस आल्सो. So as per the current market capitalization as of May 2023, it stands at $3.3 trillion. So this is very huge, and we are ranked as fifth among the top 10 most valued countries. And India has reclaimed the position as the world's fifth largest market. So in terms of market, also we're the fifth largest market, and in terms of GDP and the economy also. So that size also, like GDP, we say ki we are almost close to $3 trillion of GDP. So even there, our rank is 5. And this comes after briefly losing the spot to the France in January. So we have replaced France. Positive performance of Indian stock market contributed to this resurgence in the ranking. So this is the ranking, and top world markets we have US, and we have the market capitalization. So India's capitalization is 3.3. So like the gap is very huge. Even the gap between US and China is also very huge. So it is going to take time, but we can soon be at third position. So Japan and Hong Kong can be replaced quite soon, but again China and then USA would be very difficult to be overcome. Then BSE, Bombay Stock Exchange. So it was established in 1875. We discussed it up, and this was established as the Bombay Stock Exchange. Asia का first है, and it is the largest of Asia. Fastest stock exchange in the world. In terms of fastest, हम बोल रहे हैं कि technological perspective से settling of the trades with a speed of 6 microseconds, not seconds, 6 microseconds, and one of the India's leading exchange groups. So it has a history of 143 years, and we have seen how it has grown into an efficient capital raising platform. So it was established as a native share in the Stockbrokers Association in 1875. 2017 में it became the first listed stock exchange of India. मतलब stock exchange भी listed है market में. So BSE SME India का largest SME platform है. SME stock market exchange platform, and it has over 250 companies that are listed on this. So speed, okay Prerna, you have a doubt. Speed के context में इट मीन्स कि ट्रेड सेटल, सपोज आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, आपको किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं, तो सिर्फ 6 माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे अगर आपको शेयर एक्चुअली बाय करने में. तो वो उसके स्पीड और फास्टेस्ट से हम यहाँ पे ये चीज इम्प्लाई करते हैं. ओके मैम जी. एंड BSE स्टार MF इज म्यूचुअल फंड. इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है. 27 लाख ट्रांजैक्शंस होते हैं पर मंथ. And apart from this, we have also launched India INX, जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है, which is located at the gift city in Gujarat. इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अगेन जो सेटलमेंट्स है उनको क्लियर करना, ट्रांजैक्शंस क्लियर करना. एंड दिस इज जो हमारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज कंप्लीटली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ BSE. सो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इस नेचर के स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है दैट इज कंप्लीटली ओन्ड या होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और एक ये सेंट्रल काउंटर पार्टी है टू ऑल द ट्रेड्स विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन BSE. तो ट्रेड एग्जीक्यूशन में नेम में क्लियर है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेड्स को क्लियर करता है, ट्रांजैक्शंस को क्लियर करता है.
सो बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड ये एक और फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है बीएससी की, which runs one of the most respected capital market educational institutes in the country. So that is BSc Institute Limited. So the major role is educational purpose. So we have also launched BSc Samman, जो एक CSR एक्सचेंज है। ये भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जिसका एम है टू कनेक्ट द कॉर्पोरेट विद द वेरीफाइड एनजीओ। सो NGOs which are BSE's popular equity index. So यहाँ पे again corporate social responsibility exchange है, and it can be done here as well. So CSR is in BSE is aligned with its tradition of creating wealth in the community. Three-pronged focus है education, health and environment. So funding the charitable causes for the elderly and the physically challenged. So this can be met through this initiative, BSE Samman. And apart from this, BSE has been awarded the Golden Peacock Global CSR Award also for the initiatives in CSR by the World Council of Corporate Governance. Talking about another stock exchange which is there in India, National Stock Exchange. ये इंडिया का अगेन वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। सो NSE इज अंडर द ओनरशिप ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, दे ओन NSE. So this is world's largest derivatives exchange by number of contracts जो हम ट्रेड करते हैं वही। In terms of volume सबसे ज्यादा transaction NSE पे होते हैं compared to the BSE. So third largest in cash equities trade NSE पे होते हैं. And it is one of the largest stock exchanges in the world by market capitalization also. So Bimal Jalan committee, this is again important from prelims perspective. उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट किया कि barely 3% of India's population उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में। Only 3% of the population compared to 27% of the population in USA and 10% in China. So we have a lot of scope here. History of NSE, it was incorporated in 1992, and this was to bring transparency. It was based upon the recommendations of the Fairvani Committee 1991. So important fact हो गया. Fairvani Committee, it was the first exchange in India to introduce electronic trading facility. 1994 में इंडिया में introduce की गई, and within 1 year जो daily turnover था NSE पे it exceeded that of the BSE. Apart from this, operations in derivative segments, इसका example derivatives का options and futures होता है. Options and futures commenced in 2000. NSE is an institution of national importance with international stature, focused on investor protection, जो objective है disciplined development of Indian capital market landscape. So what is NSE Emerge? So NSE Emerge is new initiative for the small and medium-sized enterprises and startup companies. This can be directly asked in prelims. NSE Emerge क्या है? So it is dedicated for MSMEs and startups. Yeah, only SMEs, like small and medium enterprises. And these companies, they get listed on NSE without an initial public offering. Very important statement. इनको IPO नहीं करना पड़ता, and despite that, they can get listed on the stock exchange. So this platform will help the SMEs and startups connect with the investors. तो इनके लिए एक easy platform और option हो गया to raise money and funds, which would be helpful in their growth. So 200 company listed on NSE's SME platform. 200 companies have been listed so far. Stakeholders, domestic investors हैं. They have a stake in NSE, which includes again life insurance companies हैं. SBI Bank हो गया, India Infoline Limited है, and Stock Holding Corporation of India Limited. So ये सारी कंपनीज है जिसका NSE में स्टेक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि it is owned by multiple institutions. Now we'll cover NSDL और CDSL क्या है. National Securities Depository Limited and Central Depository Services Limited. So since the name is having this term depositories हैं ये, so depository एक facilitator है for holding the securities or shares in dematerialized मतलब कि virtual या electronic form में and enabler for securities transactions also. So ये main function है NSDL और CDSL का. NSDL largest depositories है world में,
1996 में हमने इसको इस्टेब्लिश किया, व्हेन वी हैड अगेन हमने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। सो उसके साथ ही साथ NSDL वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैंडल करता है मोस्ट सिक्योरिटीज हेल्ड एंड सेटल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले जो ट्रेडिंग होती थी दैट वाज थ्रू द पेपर बेस्ड सेटलमेंट किए जाते थे, एंड प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी उस मेथड में। बैड डिलीवरी होती थी, डिले ट्रांसफर होता था ऑफ द टाइटल, टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगता था, दैट वाज द प्रॉब्लम, एंड मैनिपुलेशन के चांसेस भी ज़्यादा थे। सो इनैक्टमेंट ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 इट पेव द वे। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एम है टू इंश्योर द सेफ्टी साउंडनेस ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। एंड डिपॉजिटरी सिस्टम में बेसिकली सिक्योरिटीज दे आर हेल्ड इन डिपॉजिटरी अकाउंट्स होते हैं, विच इज मोर और लेस सिमिलर टू होल्डिंग फंड्स इन बैंक अकाउंट। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं हमेशा डीमैट अकाउंट की, डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज इज डन थ्रू सिंपल अकाउंट ट्रांसफर, जैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर्स करते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, एंड इट इज हेसल फ्री। So NSDL entrusted with safekeeping following financial securities हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। स्टॉक्स को करते हैं अपने पास, डिपॉजिट बॉन्ड्स होती हैं, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स और म्यूचुअल फंड्स। और NSDL offers a wide range of services like डीमटीरियलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रीमटीरियलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, ट्रांसफर्स बिटवीन द डिपॉजिटरीज भी होते हैं, ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स किए जाते हैं, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी करता है NSDL। कोलेटरल और मॉर्टगेज ऑफ सिक्योरिटीज भी रखी जाती हैं। Consequently, जो cost है of transacting in a depository environment is considerably lower also, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो जो cost of transactions है that would also be reduced, या हम बोल सकते हैं कि brokerage would also be reduced. Now coming to CDSL, so CDSL 1999 में हमने फॉर्म किया to fulfill one goal, that was convenient, dependable है, secure depository services. So these are three keywords. एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है ये भी एक कीवर्ड है एग्जामिनेशन के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, MII, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। क्रूशियल पार्ट है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का। सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे एक्सचेंज हो मार्केट में, NSE और BSE, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम दोनों हमने ये इनको अलग अलग क्यों, मतलब NSDL अगर हमने पहले बना दिया था तो CDSL बनाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। सो सर्विसेज के टर्म्स में इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा की डिफरेंस नहीं इन टर्म्स ऑफ जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक डिपॉजिटरी सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। So both are regulated by Sebi also, and वो similar trading investing services provide करते हैं। एक difference दोनों के बीच में ये है कि दोनों depositories वो अपने operating जो markets हैं वो different है यहाँ पे, मतलब NSDL NSE के लिए है और CDSL is for BSE, क्योंकि यहाँ पे NSE और BSE में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस और जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतना बड़ा है कि एक डिपॉजिटरी हमें हेल्प नहीं करेगी, तो इसलिए हमने दो अलग क्रिएट करी। सो दोनों फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी होल्ड करते हैं, शेयर्स बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय देम, देन दे मेक यूज ऑफ डिपॉजिटरीज एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी इजीली। सो अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, लाइक DPs, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उनको हम स्टॉक ब्रोकर्स भी बोलते हैं सिंपल टर्म में, दीज आर कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स। सो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स हैं, लाइक एग्जांपल जीरो था, अपस्टॉक्स, या आज के टाइम के हम बोल सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या ब्रोकरेज फर्म्स हैं। एंड बैंक्स भी होते हैं, बैंक्स में ब्रोकरेज रिलेटिवली बहुत हाई चार्ज करते हैं कंपेयर टू दीज ओनली डेडिकेटेड ब्रोकरेज एप्स दैट वी हैव। एंड जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है दे आर रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी बाय द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी रजिस्टर्ड with the DPs, with the depositories. Functioning of depositories, so once you start your trading securities, आप buy करते हो, sell करते हो, वो आपके depository account से क्रेडिट और डेबिट होती हैं, एंड वो आप ट्रांजैक्शन भी, मतलब जैसे बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे भी आप अपने डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। So depositories provide information to the listed companies also, उनके साथ भी information शेयर की जाती है about the shareholders, and
जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी अप्रोच करती है डिपॉजिटरीज को टू गेट द इंफॉर्मेशन. सो बोथ द वेज इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर दिस टॉपिक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन टेक दैट अप. No, Mansi. Okay. So thank you so much for joining us on Ansarkari, and do subscribe to our channel.